ठीक है, अभी तो बच्चे बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। हाँ जी मैम, धीरे धीरे वो ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे आते रहेंगे मैम, उनको मैं एडमिट करता रहूंगा। प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है सर। जब तक मैम प्रेजेंटेशन ऑन कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस today's resource person. She is Dr. Namrata Johal, lecturer psychology and research project coordinator of the college, Oxford International College, England. So, madam, we are really thankful to you for sparing your valuable time and giving us this opportunity. Thank you so much. Thank you, over sir. to you, ma'am. Thank you. Good evening. आपके यहाँ तो good evening है, मेरे यहाँ morning है, so I'll say start with good evening. It's just today we're going to do is about the development and problems associated with children in development. ठीक है, तो कैसे growth and development जो है बच्चों की वो actually hamper हो जाती है, या हम कहेंगे कि वो थोड़ा कम हो जाती है या थोड़ा functioning हो जाती है development में. Why? Because of certain factors in our life. So the certain factors, the common factors are basically कि nutritive value जो है हम उसको value नहीं करते. We feel that the kids don't need that much of nutrition, so whatever they want to eat हम उनको खाने देते हैं. So that is one factor where we need to ensure that the student or the kids are having good nutrition. As teachers, as counselors, as parents, all these, obviously, because if you're doing this course, this is going to help you with your dealing with children who need your help, who need your empathy. So one thing is that if you're doing this course to become a counselor, then obviously you need to work with teachers and parents to ensure the kids develop properly. If you're going to do this course just to enhance your teaching abilities, then as a teacher, you need to work with parents to ensure that the correct development is happening with children when you are teaching them, because it's very important that the children are well nutrition is happening at home and when you are at home. So if you're in a government school, for example, there the nutrition meals that children have are in school, so the nutrition happens in the school, right? So as teachers, you have to ensure the children are having their lunch properly, they are getting nutritive value. So if wherever you feel the input is required, you need to give that. As counselors, you need to work with teachers, the school, the at home, that whether the nutrition is being given properly or not, right? Because agar suppose aap dekhiye ki nutrition mein अगर प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर प्रोटीन बच्चों को नहीं जाती, तो उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो जो है वो लैक करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों में आयरन कम है, बहुत कम है, एनीमिक बहुत ज्यादा इंडिया में हो जाते हैं बच्चे, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, जैसे कि जिनमें आयरन ज्यादा है वो चीजें वो कम खाते हैं. तो उससे क्या होता है कि बच्चे कि आयरन जो लेवल कम हो जाता है तो मेंटली जो है वो कंफ्यूज रहना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उसका एक साइड इफेक्ट आयरन का कम होने का है कि बच्चों में कंफ्यूजन आ जाती है. सो दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली बिकॉज माइंड इज कंफ्यूज. वो जो फॉगीनेस हम कहते हैं एक्चुअली इन रियल टर्म्स इज माइंड फॉग हो जाता है, वेयर वी आर नॉट एबल टू थिंक और रीजन प्रॉपर्ली. तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर समटाइम्स क्या होता है कि इंजरीज हो जाती है, कोई ऐसी स्वेयर इलनेस हो जाती है जिससे कि बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट फिजिकल एज वेल एज मेंटल को इफेक्ट होता है. तो समटाइम्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चों की ब्रेन जो है वो समटाइम्स चाइल्ड बर्थ पे नहीं प्रॉपर्ली डेवलप हुई होती, और कभी किसी बीमारी के करके या कोई ऑपरेशन के करके वो डेवलपमेंट जो है वो कम होती है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटीज है उसको वो व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव एबिलिटीज उसको इफेक्ट करती है. ठीक है. फिर फिजिकल डिफेक्ट्स जो है वो भी बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि आपके मेंटल जो और वी कुड से ब्रेन मैल फंक्शन होता है. ठीक है.
मैंने कल देखा था कि आपने actually you'd gone through emotional development, academic and social and different kind of developments. Can somebody tell me what kind of developments had you already talked about? We talked yesterday about emotional development, social development, and their needs also, and the causes and the factors which are hampering them. Mhm. Yes. Yes, So we have physical development, we have social development, we have emotional development, and which is the fourth one? social, physical, emotional, cognitive development. Yes. So all these four developments are very important for learning abilities, right? So अगर suppose हम if we take our first point कि बच्चे जो elementary school में हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी sometimes because they are so small they are very so one first point is we start from elementary school so उनकी जो वो इतने vulnerable होते हैं कि they are not even able to explain themselves they are not even able to tell them they are feeling something or they and that is where our role comes while learning this course is important that we ensure that we learn about them first because when we know the basis of that age the childhood we are able to assess people better during adulthood right so अगर आप देखो कि बच्चे जो छोटे हैं उनको कभी घर में उनको अपना आप explain नहीं करना आता if they feel bad about something तो they can't explain themselves so because they can't explain themselves we as adults are in the role that we have to ensure that this happens so when we say development two factors are very important one is hereditary and other is environment so when we say hereditary that is what ailments already exist in the family are there any deficiencies in the family that can be transferred through genes if I don't know if you've had experience of having studies case studies done so if wherever you see the twin studies happen you have realized that the hereditary plays a very important role your genes play a very important role even in twin studies we have seen that where there are identical twins their 100% genes are same they'll have the same problems but where you have non-identical twins, so their genes are not 100% same. So what happens is their what we call the genes may be differing a bit. And where if you see the identical twins, even though their genes are 100%, but if they are have their development or the environment is different, they grow up to be different personalities. Why? Because obviously here we see that the two things play a very important role: hereditary and environment. So we have to ensure that when we see there's a problem obviously the students will be there where there will be a problem right so when we see that a child is not behaving in a normal way so when we say that if the child is not behaving in a normal way as an adult what would you say what are few traits that you would notice that this is not normal anyone Ma'am, can you repeat the question? I'm saying is that if suppose, as I said, that as adults we notice that some children are not behaving in a normal way when they are around you, so they're away from home, they're not behaving normal. So how will you assess that this is not a normal behavior of a student or a By child? by जैसे वो परफॉर्म करते हैं क्लास में या जैसे Hmm? वो बच्चों को हिट कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उनके अंदर अग्रेशन है या कोई ऐसी सच प्रॉब्लम है जिससे वो स्ट्रेस है जो हमें कल बताया गया था क्लास में. बिल्कुल सही बात है कि अगर आप Ma'am, देखेंगे अगर हाँ जी one more thing I would like to add in this, जैसे कल मैम ने बताया था कि अगर कोई चाइल्ड लोनली है, किसी के साथ क्लास में मिक्स अप हो रहा है and that person is sitting aside and not taking interest in anything, so that could also be case like this that बिल्कुल बिल्कुल वो he or नॉर्मल she is not. बिहेवियर नहीं है बिल्कुल बच्चों बच्चों का तो ये नॉर्मल बिहेवियर हो ही नहीं सकता कि वो चुपचाप बैठे राइट तो अगर वो चुपचाप बैठे हैं अब रेगुलरली यू आर सीइंग कि एक बच्चा है वो अपने आप को अलूफ रख रहा है सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड इन दैट चाइल्ड राइट तो जब हम ये कहते हैं तो उसका मतलब है कि हमें उसका बैकग्राउंड जो है वो असेस करना बहुत जरूरी है कि उसको क्या प्रॉब्लम है कहीं अब्यूज तो नहीं हो रहा कहीं निग्लेक्ट तो नहीं हो रहा कहीं कोई बायस का शिकार तो नहीं है राइट सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी नोटेड आगे बढ़ते हैं
ओके, सो मेंटल एंड फिजिकल जो आपकी डेवलपमेंट है, एज दिस इज सेइंग, हम वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, इट गोज हैंड इन हैंड. सो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, बोथ ऑफ देम आर हैपनिंग प्रॉपर्ली. सो जो कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, वो क्या होता है कि उनको यूजुअली क्या होता है कि ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन, वी टॉक्ड अबाउट कि इंजरी हो जाएगी. सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. फिर उनका क्या होता है कि जब कभी उनके सपोज फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स, हम सोच लेते हैं बच्चों में नहीं होता, बट आजकल अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है डिप्रेशन इन किड्स, राइट. सो जब अगर बच्चों का मेंटल ग्रोथ है वो हैम्पर होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज गॉट डिप्रेशन, ठीक है, तो वो क्यों हैम्पर हो जाती है? क्योंकि आप डिप्रेशन में है तो आपका एक पैटर्न जो है नॉर्मल से डिविएट कर जाता है. What you do is you start either eating too much, because some people have this reaction of comfort eating, and some people will stop eating, they will not eat at all, they'll keep sleeping, they मैम will इसको not get. बुली इफेक्ट भी बोलते हैं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसको ही बोलते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है. सो अगर आप ये देखें कि अगर सपोज बच्चा नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, उस पर न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो रही है, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर, ऑक्सीजन नहीं जाएगी बिकॉज कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सो ही जा रहा है, और अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि आपकी ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, एंड देन व्हाट विल हैपन, द फिजिकल एस्पेक्ट विल आल्सो बी हैम्पर्ड, राइट. अब जैसे एक और चीज है कि अगर बच्चे में कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है, राइट. सो अगर बच्चा को डायबिटीज है प्लस उसको वो कोप अप नहीं कर रहा उसके साथ, अदरवाइज डायबिटीज इज नॉट अ वेरी बिग, it is obviously a big problem in the sense if it is not managed properly, but if it is managed properly it can be controlled, it can be looked after. but क्या होता है कि जब एक बच्चे को डायबिटीज होती है बिकॉज उसके इंसुलिन लेवल्स इतने हे वायर हो जाते हैं, तो उसके जो मेंटल इक्विलिब्रियम जिसको हम कहेंगे वो भी इफेक्ट करता है कि समटाइम्स द पर्सन इज फीलिंग वेरी गुड, समटाइम्स दे आर इरिटेबल, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू कोप अप बिकॉज बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या कुछ, और वो फिर बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो उससे क्या होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि किडनीज को कैच कर गया, राइट, किडनीज की प्रॉब्लम हो गई. सो जो ये चीजें हैं, ये क्या होता है कि बच्चे का जो नॉर्मल वर्किंग है उसको हैम्पर करता है, राइट. नाउ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बट when we say nutrition, how it is affecting the academic performance also. How does it affect academic performance? Because as we've already discussed कि अगर आप बच्चे में proper nutrition नहीं होगा तो उसके जो proper growth और या development नहीं होगा, उसका for example उसको सोचने की शक्ति, उसकी for concentration levels will go down, right? और उससे क्या होगा, फिजिकल इलनेसेस जो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट विल आल्सो बी अ बिग इशू. अब sometimes what happens is, what two things as counselors you can counsel the parents, or as teachers you can counsel the parents, is that when these kids are not eating properly, what will happen? Obviously, as we've discussed, that they will physical and mental abilities will be hampered, but at the same time we need to find solutions. So if they are not eating properly, what advice would you give to your to their parents as counselors? What advice, because this is our duty, right? Or as teacher counselors, what advice would you give to your their parents? First, we should prepare a diet chart in which we properly mention the nutrition value of that thing or this thing, which will help them in their growth years. Mm-hmm. We can prepare Yes. diet chart and also some physical activities which वो एक होता है ना joyful moment create करने के Yes. लिए, जिससे उनका Yes. stress level increase जो है decrease हो जाए. ये सब activities हम suggest कर सकते हैं. बिल्कुल, उनको ऐसी एक्टिविटीज जो प्ले का फ्रूटफुल हो, वो उनको Yes. ऐसा. Ma'am, I would like to add something. हाँ जी.
Ma'am, like she said that we can make the atmosphere joyful. I would also like to say that we can first get the child examined. Like you said earlier, that iron levels are okay or not. Then we can get it checked that albumin level is okay or not, and then we can plan the diet accordingly. बिल्कुल And while giving them, we can do some experiments so that they the look should be creative and appealing, so that the child can have it. बिल्कुल बिल्कुल Because अगर एल्बम लेवल्स कम हो जाएंगे तो सीधा किसको इफेक्ट करेगा बच्चे का what ma'am, albumin level. या मैम किडनीज पे भी इफेक्ट करेगा बिल्कुल बिकॉज या मे बी प्रोटीन यूरिया हो रहा है दैट्स व्हाई द एल्बुमिन लेवल्स आर डिक्रीज्ड बिल्कुल definitely so that is a big thing so this is something parents need to know so nutritive value क्यों कौन सी चीज किसकी कमी है but yes for initial हमने क्या करना है कि हमें ये तो पता लग गया वो तो टेस्ट आएंगे आएंगे राइट और हमें क्या करना है सबसे पहले कि हम टेस्ट के लिए कह देंगे विच इज वेरी गुड वो टेस्ट करवाएंगे और अगर इन केस वो नहीं करवाते तो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या डाइटरी जो फिलहाल क्या हैबिट्स है राइट व्हाट आर दे ईटिंग अगर हमें वो थोड़ा पता डाइटरी लगे हाँ जी मैम एज अ लेमैन हम 24 जो कर आवर्स सकते हैं पहले हम डाइट चार्ट वो कर सकते हैं हाँ बिल्कुल पहले एज वो अ लेमैन एज ए लेमैन पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो क्या खा रहा है फिलहाल तो क्या चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ना खाए और क्या चीजें जो हम ऐड कर सकते हैं तो वो सब हमें बैठकर एक अच्छा चार्ट बनाना हो चाहे वी कैन से डे टू डे हम देखें कि आज हम सिर्फ एक चीज ऐड करेंगे कि बिकॉज टू मेनी थिंग्स कैन बी लिटिल इंटिमिडेटिंग फॉर अ चाइल्ड सो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आपने एप्पल रोज खाना टू बिगिन विद राइट ताकि हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करें ठीक है कोई कुछ कहने वाला था मैम जैसे बच्चों को इस एज में वो और डिसऑर्डर होता है बच्चे हम्म बहुत सी उल्टी चीजें खाते हैं लाइक मिट्टी खाते हैं कुछ पेपर खाते हैं तो इसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ हैम्पर करती है वो तो इसीलिए स्टार्टिंग प्रोटीन में में कोई डेफिशिएंसी होती है जब मिट्टी खाते हैं या कुछ कैल्शियम की कमी होती है तो ये जो सब चीजें हैं ये एसोसिएटेड है विद व्हाट डेफिशिएंसी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो अगर मतलब ऑब्वियसली आप फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई जो भी चीज आप खा रहे हो ना वो एसोसिएटेड है विद द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल इन योर बॉडी तो हमें ये पता लग गया कि अगर बच्चा खा रहा है या चौक खा रहा है या कुछ खा रहा है तो दैट मीन्स देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द चाइल्ड राइट वो तो हमने टेस्ट कराना है लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे नॉर्मल डाइटरी में हम एक हेल्थी चीजें जो है वो डालना शुरू कर देंगे जो कि मोर फ्रूटफुल होगी फॉर एग्जाम्पल जो चीजें उस बच्चे को अच्छी भी लगे से फॉर एग्जाम्पल हम उनको ऐसे बोल सकते हैं कि नट्स खा लो ओके नट्स नहीं बच्चा खा रहा है बादाम वगैरह तो उसको पीस के उसके खाने में डाल दो ठीक है ना सो दीज काइंड ऑफ आइडियाज एज काउंसलर्स यू कैन ओके ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट सो वो क्या कहते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है बेसिकली व्हेन वी आवर फिजिकल development is being hampered we are not able to do things properly psychologically it is affecting us because हमारी जो mental growth है वो proper नहीं हो रही और जब ये चीजें होती है और हमें ऐसे लगता है कि हम नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ अ फिजिकल प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ द वे वी थिंक तो हमें इमोशनल इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड राइट फिर आपकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको वो इफेक्ट करता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें हर बात पे डांट पिटती है हर बात पे दैट इज हमारी फॉल्ट तो नहीं है लेकिन हमें फील होना शुरू हो जाता है कि प्रोबेबली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस राइट अब क्या होता है कि आपको कोई चीज आपने करनी है आपको उसके लिए डांट पिटी है यू गेटिंग अ पनिशमेंट फॉर दैट सो व्हाट हैपेंस आप में वो चीज करने के लिए डर पैदा हो जाता है तो आप बोलते नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर है टीचर क्लास में एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी बनकर टीच कर रही है ठीक है बच्चे आर नॉट एबल टू टॉक टू हर ओपनली लाइक दे वुड टॉक और एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्योंकि एवरी टाइम मैं अपना कोई डाउट क्लियर करना चाहती हूँ टीचर मुझे डांट देती है और मैं फिर चुप कर जाती हूँ ठीक है
और वो जो डर पैदा हो जाता है उससे क्या होता है कि मैं कुछ भी बात नहीं कर पाती। अगर कल मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है और जिसकी वजह से मैं सर्टन चीजें स्कूल में नहीं कर पाती, मैं वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकती क्लास में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का, हमारी बॉडी जो है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म खुद बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अ टीचर, she is scolding you and you are afraid to talk to her, so what happens is you start developing a defense mechanism because of that rejection, because of fear. So wo jo, everybody has different, every individual will behave differently, right? So you have to adjust, or you have to, so sometimes what happens is people start lying, people start saying things which are not real because that is their defense mechanism at work, right? They just want to be safe. So, and what happens is, because when you have become so unreal, your emotional stability is hampered. Why? Because emotionally you know that this is not real you, right? Internally you know it, that this is not real you. So what happens is, this is not the behavior I want to. So you feel a little suffocated. And when you're suffocated in certain environment, it will affect your emotions, right? Was somebody ready to say something? I just heard a mic. Okay. Okay, problems associated with academic achievement. So what happens is, there are many problems. So sometimes what happens is, agar aap achieve nahi kar pa rahe as target. So this is how, as teachers, what are our expectations from the children? That is what will happen here. The academic performance can hamper is, sometimes what you see, the child is very intelligent, but when it comes to exams, they are not able to perform, right? So why they're not able to perform when they're intelligent and they're doing everything very meticulously? Can somebody say what could be the factors? मैम बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को एक कंसेप्ट क्लियर है बट उसको राइटिंग स्टाइल नहीं आता, या उसका ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर एक ऐसी चीज थी जो वो पूछना चाहता था बट वो पूछ नहीं पाया ड्यू टू मैम ने डांट दिया, फिर वो डाउट मन में ही रह जाएगा, फिर वो एग्जाम में एज सच परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और समटाइम्स क्या होता है कि वी डोंट नो, बिकॉज एंजाइटी एक ऐसी चीज है, मेंटल इश्यू है, जो कि आपको बिल्कुल ब्लैंक कर देती है, राइट? सो कई बच्चों को फेयर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, तो वो as soon as they see the hall, they have these anxiety attacks and they are not able to perform. Sometimes आप कहते हो ना, बैठे वो ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल ही दिमाग सोच ही नहीं आया कि मैंने क्या लिखना है, क्या स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका एंजाइटी लेवल जो है वो हाई हो जाता है। सो आजकल तो बहुत चीजें होती हैं कि बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। व्हाई दे मेक यू डू दीज एक्सरसाइजेस नाउअडेज? बिकॉज ये सब चीजें देखकर उन्होंने रियलाइज करा कि एज अ स्कूल, एज एनी इंस्टीट्यूशन, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सबको ही करवा लें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो जो एंजाइटी के साथ सफर कर रहे हैं बच्चे, they won't have problem. So they're going to do breathing exercises for say 2 minutes while they're waiting for their question paper before they start the exam. उससे क्या हुआ कि वो काम हो गए, उनका एंजाइटी लेवल जो है काम डाउन हो गया, and they will perform better, right? फिर एकेडमिक, आपका पॉवर्टी जो लेवल है उसके ऊपर भी फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, बिकॉज इफ यू बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली, देयर विल बी मेनी फैक्टर्स। वन, नो प्रॉपर न्यूट्रिशन, हंग्री, यू आर हंग्री व्हेन यू कम टू स्कूल, बिकॉज कोई था ही नहीं घर पर आपको ब्रेकफास्ट देने के लिए, आपको फीड करने के लिए, बिकॉज वो आपसे भी अर्ली चले गए काम करने, बिकॉज दे हैव टू मेक द एंड्स मीट। They could be because they had deprivation, is because they are deprived. Why? Because they're deprived from their parents' love. They could be deprived from proper education in the childhood. So they've come straight away. They're trying to find their way in the academics. It could be because they were not cared for properly, or they had certain abuse issues in childhood which are playing up with them, right? So they were deprived of proper environment in the family. Then there could be, why irregular attendance? So that becomes a very important. It could be for because of poverty reasons, it could be for health reasons, it could be because of the environment at home, the child is too pampered,
It's not necessary. Deprivation is not the only thing that can hamper it, and also too much of looking after, too much of pestering, too much of smothering can also affect child's development. So घर में आज मामा दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने को, ओके कौन सा PhD करनी है, घर में रहो, right? These things happen. So but they don't realize that when the child is the basis, the first 5 years of your life are the most important. From birth till 5 years, whatever you're learning in those 5 years, whether you are taking on, whether you're speaking those or not, but it is somewhere in your subconscious going. So if you're missing that first 5 years of schooling, first 5 years of interaction, first 5 years of your development, that will affect your later stages in life, right? So it is very important that the child has regular attendance. So as teacher or as a school counselor, your first duty is, if you see that is first alarming thing, that a child is not regular in school, very, very important. Even if the child is normal, that can still be taken care of. But if the child is not attending the school, that can become a very big issue, because you will not know the child, how to deal with the problem. So when you see irregularity in the child's performance where the attendance is concerned, you have to straight away address that issue. So this is very important. Like most of the schools, they prefer 80% attendance is because of this reason, that if they miss so many classes, their educational or academic performance will go down, right? Then there's another problem in development is gender bias. Now we have many genders, right? So we can't just stick to male, female. There are many other issues arising with this open world now. So, but usually still in our Indian culture, we still have this problem is about where boys are on better than the girls. Boys have more priorities. Boys are given more love and affection than girls, especially in remote areas. So city life has become better now. They are equally looked after, but still somewhere back of the mind, they feel that if a girl is born, she's a responsibility, a liability, whereas a boy is going to take the family name forward. So he's a better child to be in the house. So sometimes we somewhere consciously, subconsciously, whether you say it to the children or not, but when we are behaving in a family in a way where the father doesn't do anything in the house, even if both the parents are working, mother is also going out to work, father is also going out to work, but when mother comes in, she quickly goes in the kitchen, she does all the cooking, she does all the cleaning. When she comes back, and father comes and relaxes on the sofa, right? Even if the father is telling the children, go help mama, go do this, go do that, it doesn't really matter, because subconsciously you are giving this impression to the child that this is the role of a male in the family and this is the role of a female in the family. And what happens is, a girl who's going out in the environment where the environment is telling that you have equal rights, you have equal opportunities to work, you should study just the way boys study, what happens is you have confused the child. At home, they are playing a different role. In the environment, they have to pose to be different. So what happens is they really don't know what to do. So when we give them that confused environment both ways, whether it is because of our own schemas, culture schemas, or because of our own prejudices, what happens is we are actually hampering their thought process. We are confusing the child. We are hampering their development, right? And nowadays, you have obviously many other influences as well, because media and we being connected to the world, there are other different genders that have come up as well. So the children are more aware of all these things because of being so closely connected to the world now. Okay, so how do we apply all this knowledge that we have? So we say that parents, teachers, and counselors are a close-knit unit for the right development of the child, right? So first thing we need to know is that, do you think all the things that we are talking about, the problems and the solutions, would work together for all the children? Anybody? No, ma'am. I don't think so कि सबके लिए same चीज apply हो सकती है, क्योंकि सबकी problem अलग होगी और सबके circumstances भी अलग होंगे. Definitely, yes. So what happens is every child, so we have to treat every child as an individual. So all the problems
somebody is one child is having will not be exactly as the other. Why? Because every individual is different. Their mental growth, their physical growth, the way they perceive how we our mental health, that will also be a very big issue here. So how we perceive things, how things are uh, said to us, and how we take them, that is also very important, right? So as parents, teachers, and other adults, a counselor. So we have to be a close knit unit to ensure that the children are getting the best out of our counseling, best out of whatever we are catering for them, right? So if in case a child is in a problem and we meet a parent, the first thing we need to do is not to tell that this is what you think. As a counselor or as a teacher, we sit with the parent and we learn what the parent has to say about the child. Because when we let the other people talk, we come to know much more about them than we can about assessing, after assessing and talking about it. So when a parent comes to see you, or you have asked the parent to come and see you. So the key is that we ask them what issues they are having with the child, if they are having any. If they're not having any, then what do they think about the child as being in home? Because children are totally different in school and they are totally different at home. So they are two different personalities altogether. I had a student who was very quiet, who would not speak a word in the school, and he was very, very naughty and very creative and everything possible at home. So what we realized was that because his mom was very, very good, it wasn't because she wasn't good or she was strict. No, she wasn't strict. She was very good, very loving, and she had created an environment at home which helped him, create his own things. He was never stopped from anything he could create. And he was not stopped. He could make a mess, he could do everything. But when he came to school, he suddenly had a very controlled environment. See how quickly they assess. And that child I'm talking about is 4.5 years old. So how quickly that child has assessed that he has come into a very closed environment. Ma'am, is say split personality is a very big word, but double personality per person can attain na? Like he's totally different in house or totally different in school. That would be बच्चों के लिए कहना कि split personality है, it would be a little नहीं hard. हाँ या वही बोला मैंने कि हाँ, अगर it दो would be a very personalities big word. हाँ, पर आप ये सोचो कि वो बच्चा right now what I assessed was that child was very intelligent. So इससे हमें ये पता लगता है कि हम चाहे बच्चा है, we have to treat the child as an adult. So अगर हम काउंसलिंग करें, हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. जब हमने उनके बारे में समझना है ना, हमें उनको एडल्ट की तरह ट्रीट करना पड़ता है. जैसे कि अब मैं एग्जांपल ये इसीलिए दे रही हूँ कि बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हाउ एनवायरनमेंट कैन चेंज योर परसेप्शन, योर थिंकिंग. अब वो बच्चे ने स्कूल में टीचर कहती है कि ओ ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो इसको बिल्कुल हमें बहुत ज्यादा कहना पड़ता है तो कहीं जाके एक वर्ड बोलता है. फ्रेंड्स, उसका एक स्पेसिफिक फ्रेंड है, बस उसने और किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, बस अपना चुपचाप काम करता है. बट व्हाट डिड दे रियलाइज आफ्टर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि उसकी मामा ने उसको कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करा. जब वो स्कूल में आया, उसने क्या नोटिस करा कि द चिल्ड्रन वर टोल्ड स्टॉप टॉकिंग, डोंट टॉक. Do you get it? Just simple words we are speaking, but we have affected the child. So he realized, and because he was a sensitive child who didn't like to be pinpointed, who didn't want to feel somebody is telling how wrong he is because he has never been wrong at home. So what happened? He was quiet. He started assessing the environment. But as soon as the teacher changed, he went into the next class where as soon as he realized this teacher is giving him all the opportunities he could get at home, because it was more of a learning environment. What the teacher used to do in the next class was she would just, as soon as they would enter, there were toys in the class. So she would tell them, go play. Till the time she will do proper teaching will start. You can go and play with the toys, do whatever you like. And they were doing it. They were enjoying and everything. But at the same time, they were learning because the toys were as per the topic that they're going to learn. So the toys, only those toys were there.
So if they suppose they're learning about fruits, so only fruits were there. So do you get this? So the child learned that, oh, I can speak, I can tell something, I can, and he opened up. So this example I am giving is that sometimes as a collective unit, we have to realize the individual mental setup. So if a child is sensitive, then we have to ensure that we give them the environment that is good for their development. Right? Do you agree with me? Yes? Yes, ma'am, Yes, ma'am. totally agree with you. Yeah. So, but split, because you talked about it, so I will say split personality is a mental issue. And so I'm just discussing this is because you've just talked about it. This is nothing to do with the environment, because there are certain things they are not properly functioning in your brain when you become split personality. So it is totally your mental or how your brain functions. Because I don't want to go into मैम it, but I'm just saying it. It's not that I've said it's wrong. We tend to use this word. I would have also used many times. I'm not saying, it's just that I just thought that you've used this word and we are so many of us sitting. So I just let you know that if we see that this personality is drastically changed, it's a split personality, we can't do anything. Then that person needs proper psychiatric treatment. Okay? मैम एक क्वेश्चन पूछना है मैंने। हाँ जैसे जी, बच्चा क्लास में मतलब पढ़ना नहीं चाहता हाँ जी। और मतलब घर का काम करने वो तैयार रहता है अपने घर में हम्म। ऐसे बच्चे को हमें क्या ट्रीट करना चाहिए? देखो, अब ये डिपेंड करता है एज अ टीचर आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, अब जैसे यस सपोज मैम। पढ़ना नहीं चाहता, सो दैट मीन्स ही इज एक्चुअली एनवायरनमेंट कैसी है ये मुझे पता नहीं है अभी फिलहाल, सो आई कांट ऑन दिस। बट अगर बच्चे की एनवायरनमेंट वो है जहां पर बच्चा पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, यस मैम, राइट? पुअर बैकग्राउंड है। हाँ, तो वो क्या हो गया कि उसने क्या करा है कि ही हैज नाउ डेवलप्ड सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिम, राइट? सो उसको ये लगता है कि घर में मुझे कुछ करना है, मुझे घर में कुछ करके लाना है। तो हमें जो स्कूल में है ना, उसका जो मेंटल सेटअप है उसको ऐसे चेंज करना है कि जो ये पढ़ रहा है स्कूल में, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प हिम एट होम, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प हिम इन अर्निंग मनी टू बिल्ड रिचेस फॉर हिज होम, राइट? आप समझ यस रहे हैं मेरी मैम। बात? वो कम्युनिकेशन हम कैसे कर रहे हैं? अब नेक्स्ट एनीवेज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का टॉपिक ही है, तो हम उनके साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आई वुड से, अब मैं उस बच्चे को जानती नहीं हूँ, मैं असेस नहीं कर सकती, बट यस आई मैम। विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर सपोज वो स्कूल में है, तो आप जो भी उसको क्या एज है उसकी अप्रोक्सीमेटली, आई कैन मैम 12 10 या 11 के आसपास है। ओके। सो अगर वो 10 साल का है सपोज, तो उस घर में वो घर के सारे काम करता है मामा के साथ कि नो मैम, उसकी मम्मी जैसे बाहर काम करने जाती है, ठीक है, वो पीछे काम कर लेगी, वो उसको मना करके जाती है तो उन्हें काम नहीं करना, तो उन्हें पढ़ना है, बट वो पढ़ती नहीं है, वो घर के काम करने लग जाएगी और स्कूल में आके बैठ जाएगी, मतलब इधर और बच्चों को डिस्टर्ब करती है। और जैसे मैं चली जाऊंगी क्लास से बाहर तो कहेगी मैडम काम तो देती नहीं है। अच्छा, वो पता क्या बात है, क्योंकि उसको चाहे वो डिस्कस करे चाहे नहीं, लेकिन यस उसके मैम। सामने उसके अंदर जो है ना वो ये है कि मामा मेरी काम करने जाती है और मेरे को उसको हेल्प करना है। स्कूल की पढ़ाई ओके। करके क्या करना है, वो तो हेल्प नहीं करेगा ना मामा को। यस मैम। व्हाट वी पेरेंट्स मीटिंग में उससे हाँ जी, सॉरी। पूछा हमने कि मतलब हाँ। क्या प्रॉब्लम है बेटे, आप बताओ, क्या मम्मी काम करवाती है? कहते नहीं, मैं खुद करती हूँ। मतलब मैं पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान देते? बस मेरा मन नहीं करता, मेरे को आता उसकी है सारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होगी, और ये भी हो आता कुछ सकता है। भी नहीं है। कुछ नहीं मैम आता उसका जी। मैम उसका ये भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट नो नहीं बना अभी तक पढ़ाई के हाँ, लिए। बिल्कुल। वो तभी मैं कह रही हूँ। प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है क्योंकि हाँ जी, जैसे वो कभी स्कूल नहीं गई, सीधे 4th में 3rd क्लास में उसको ले लिया गया। राइट टू एजुकेशन है, ये तो आपको पता ही है। बेसिक्स ही नहीं है ना फिर बच्चे के पास, ही यस डज मैम। नॉट हैव द बेस। अब उसके जब एबीसी नहीं आता, आप सीधा उससे सेंटेंस फॉर्मेशन करवा रहे हो, तो बच्चे को कैसे नो इंटरेस्ट? मैम, नो नो नो, हाँ, हम तो पहले बेसिक ही कराते हैं। ओके। हम बेसिक ही कराते हैं, सिंपल वर्ड। पहले हम जब तक उनको हिंदी ठीक से नहीं पढ़नी आती तब तक हम उनको मेन क्लास में नहीं बैठने देते।
ओके अभी वैसे हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया में प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव दैट मेनी रिसोर्सेज। Yes, ma'am. सो अगर सपोज अब यहाँ जैसे कि प्राइवेट स्कूल वगैरह होता तो उसको डिफरेंट तरीके थे, जैसे कि उसको गेम्स Yes, दे ma'am. देनी थी पढ़ने के लिए, या उसको मैंने हम्म। लेटर्स दे देनी थी, जैसे वो हमारा हम्म। मैग्नेट बोर्ड नहीं होता लेटर्स का, जी जी जी। वो दे दो कि आप परफॉर्म करो इस पे वर्ड्स ये वाला बच्चे लिख रहे हैं आप इस पे ये बनाओ। और क्योंकि उसको आदत नहीं है लिखने की, उसको आदत नहीं है पढ़ने की, तो वो नहीं हुआ Yes, है ना, ma'am. तो वो उसको मुश्किल हो रही है। अब इतना बड़ा बच्चा हो गया, अब एक आदत पड़ गई सर्टन चीज की, एक उसको अंडू करना सबसे पहले और फिर न्यू चीजें लर्न करना मुश्किल होता है। देन टू दैट इज व्हाई आई सेड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 0 to 5 years द चाइल्ड शुड गो इनटू द लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन आता है। अब उसके पास अपना तरीका है सब कुछ करने का, और जो चीजों को यूज टू Yes, होगी, ma'am. अब अगर आप देखो कि घर में जब वो रहती होगी, शी वॉज वर्किंग विद मदर, तो वो उस चीज को यूज Yes, टू ma'am. होगी और वो बहुत अच्छी तरह करती है जी। ना। सॉरी वो टू हमारे इंटरप्ट यू, बट हाँ जी। अगर आप क्लास में फ्रेंडली एनवायरनमेंट दो, जैसे कि वो अभी न्यू है इन सब चीजों के लिए, No, अगर आप no, उसको no. फ्रेंडली 1 years एनवायरनमेंट above. She's नहीं, 1 years कई बार above. ऐसे नहीं, कई बार ऐसे हो जाता है बच्चे को ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि वो कभी आई बच्चे 20 साल की 10 साल की वो स्टार्ट करा है, तो उनको ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है। और ठीक है ना, वो उसको तो फिर हर बच्चे का अलग होता है, कईयों को साल लगता है, कईयों को 2 साल लगते हैं, हाँ तो मैम और मेरे उसको भी पास हर समझना बच्चा चाहिए। सेम ही प्रॉब्लम का आता है, हर बच्चा ये अज्यूम करना ही आउट सबसे ऑफ बड़ी स्कूल बच्चे गलती आता हो है। जाएगी फिर। नहीं, आपको बेसिकली सबसे क्या बड़ी करना प्रॉब्लम है, हमारे पास ही आती है। नहीं मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बैकग्राउंड्स उनके जो है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली लेस फॉर्चुनेट हम जिसको कह लें कि हैं, बिकॉज दे फ्रॉम अ वेरी बेसिक बैकग्राउंड। तो हमारा जो की है फैक्टर यहाँ पर इज टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद देम, टू टॉक टू देम इन अ ओके। वे। हमें हमारा जो तरीका है ना पढ़ाने का, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल से चेंज करना पड़ेगा विद दीज चिल्ड्रन। सो वील हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन अ डिफरेंट वे। अगर हमने वही चीज पढ़ानी है, लेकिन उनको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ा लो, सारी क्लास को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ा लो, बट यस मैम, वही डिपेंडिंग कराते हैं। कर दो कि जो लोअर लेवल के उनको डिफरेंट दे दो, जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज दे दो। फिर क्या करो, हम्म। आप पेयर टीचिंग करो क्लास में, कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ उनको बोलो कि आज आपने अपने इस फ्रेंड को ये 2 चीजें सिखानी है, और यस फिर मैम, करते हैं। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मैंने नहीं करना। मैम एक सबसे इजी तरीका है, जैसे मैं बच्चों को कराती हूँ, मेरे पास भी ऐसे ही हाँ बच्चे हैं, तो उनका जिस दिन टेस्ट लिया जाता है, जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए क्लैपिंग की जाती है। क्लैपिंग से बच्चे को क्या होता है कि जिसके लिए क्लैप हुआ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जिसने सबसे लोएस्ट परफॉर्म किया उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको मैं सिर्फ अपने पास बिठाती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो उसके अच्छे मार्क्स आए। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो बच्चे के अंदर लाना, और फिर उसकी प्रॉब्लम समझना कि आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ, उस जिसके अच्छे मार्क्स आए आप उससे जाके पूछो कि उसका कैसे अच्छा हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ। तो इससे बच्चे को अपनी प्रॉब्लम भी समझ आएगी और वो कैसे अच्छा करे वो भी समझ आएगा। ये एक तरीका है कि अगर ये यूज आ गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं यूजफुल होता, कई बार बच्चे फ्रेंड्स के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करते, अगर अगर आप बिकॉज ऑब्वियसली द इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से वो कभी कभी नहीं भी अपने आप को और एक मोड पे ले जाते हैं, which we call defense mechanism, where they say that they are not bothered, they do care less. It's not यस that मैम, they नाउ fear a lot. That is why they have created this defense mechanism, because they don't want to be rejected. So they want acceptance कि this is my behavior. I don't want to learn, you know. But the fact is this, यस they are मैम। not. It could be that she has learning difficulties. We don't know. We haven't assessed the child. So these things have, as a teacher, you have to see that does she have a learning difficulty? Is she able to assess what she's doing? Is she able to logically assess things? Give her more of those things first before you start teaching formally. No? ओके। Which probably haven't been done with her for a very long time. Okay, अब हम आगे move करते हैं, because otherwise we'll miss out on our syllabus, right? What interpersonal communication. So again, we were anyways talking about communication. So communication very important. Two-way communication. वो कहते हैं कि obviously it is key. So when we are communicating, what is the very very important way of communication? What do you think is the key for communication?
How do अपना we मैसेज communicate? जो है वो उसको सेंडर जो है वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाते हैं। जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एक तरीका हो गया हमारा कम्युनिकेशन का। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे में क्या एबिलिटी होनी चाहिए टू कम्युनिकेट? कि हम जो कहना चाहते हैं वो उसको इजीली समझ आ जाए। हाँ, ये एक तरीका, बट अकॉर्डिंग टू मी लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन। अगर एज अ Language also, पर्सन यू आर नॉट, सॉरी ma'am, सॉरी, language is also a very key point for communication. बट बिफोर दैट लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एज अ Listening, पर्सन, yeah. हमारे में एक गुड लिसनर की ट्रेट होना चाहिए। अगर हमारे में गुड लिसनर की ट्रेट नहीं है, हम गुड कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें आना चाहिए एक तरीका कि हम सुन पाए लोगों की बातें बहुत ध्यान से, बहुत ऑब्जर्वेंट वे से। अगर हमारे में लिसनिंग एबिलिटीज हैं, ओनली देन वील बी अ गुड कम्युनिकेटर। Even if we are able to speak well, even if we know the right terms to use, even if we know how to communicate, but if we don't have the ability to listen properly, then we are not able to communicate our own. ठीक है ना? अगर मैं आपकी बात ही नहीं समझ रही, मैं आपकी बात ही नहीं सुन रही हूँ, और मैं अपना बताई जा रही हूँ, लेक्चर दे ही जा रही हूँ, तो आपको क्या समझ आएगा? हम क्या बात करेंगे, राइट? अरे मैडम ने तो सुना ही नहीं, मैडम तो अपना दे के चली गई, मेरी बात तो सुनी नहीं, ये तो मेरा डाउट रह ही गया, राइट? ट्रू। Yes, so verbally listening is very important. And then when we say the communication of interpersonal skills, there are not only verbal and non-verbal, there are written and when we say visual communication as well. So here in your book, you have verbal and non-verbal, but we can also add written and visual. So when we say verbal, that means how we are talking. So when we talk, our tone, how comfortable we can make the other person. Non-verbal is our expression, how we look at somebody, what kind of faces we make, whether we are standing, we have to sit. If we are sitting, what is our body language? How do we tell the person that you talk to us, or we are open for your communication? So all these things obviously come by time, but these are important. Then written communication. As counselors, as teachers, you have to write certain notes. If you're assessing a child, you have to write about that child. So when you're writing about that child, it has to be very, very specific. It has to be very simple. You can't use fancy words, because obviously, agar aap parents ko dikha rahe, it's not necessary you have a very good command over the language. Parents don't have a good command over the language. You have to ensure that you write it in simple words. Then after writing in simple words, there's another thing, that because it has to be very formal. You can't have like किसी को ताना मार दिया या जनरल कमेंट मार दिया कि हाँ वो तो मजाक ऐसे कर लिया. No jokes, nothing, just very formal message has to be conveyed. Your written communication should be that simple, and in the same way it should be very positive. Even if you need to say something negative, it should be wrapped in positive comments, that even if the child by chance reads your message, they don't get a wrong message. They get this message that teacher is talking for our well-being. Very important. Then when we say visual, मैम आप इसका एग्जांपल बता सकते हो कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? written, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चीज को okay, पॉजिटिव कैसे? हाँ बिल्कुल ठीक है. जैसे कि सिंपल बात है कि अगर सपोज मैंने किसी को ये बताना है कि ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा शरारती है क्लास में, सपोज, या कंसंट्रेशन लेवल इसका अच्छा नहीं है, सो सिंपल टर्म में हम उसको ये बोलेंगे कि से इंग्लिश में अगर मैं इसको रीफ्रेम करती हूँ, so I can say that for example Rohan, I'll just take a name easier for me to frame a sentence. So Rohan works very well in the class. So if he's communicating, so there would be some good trait in the child. Say for example, when they're playing very well. He's very communicative with the children. So you can say that he communicates very well with his friends. He plays very nicely, but at times, because he's so engrossed in helping his friends, that at times he misses my instructions and therefore misses his work. क्योंकि उसने काम नहीं करा. Do you get me what I'm saying? And the यस message is मैम. wrong. जैसे रिपोर्ट कार्ड में वो पीछे वाले में परफॉर्मर लिखा होता है तो वो वैसे वाला.
परफॉर्म, सॉरी, रिपोर्ट कार्ड्स में परफॉर्मेंस लिखते हैं ना स्टूडेंट हाँ की, जी, हाँ जी, हाँ तो जी, उसमें टीचर्स रिमार्क लिखते हैं जो वैसे हाँ। जैसे वो लिख एज अ टीचर ये आपकी लोग अगर आई सेंड फ्यू positive way of writing reports. I'll send those आपको मैं सर को भेज दूंगी, sir will communicate, or I can actually download it for you on WhatsApp. Would that be easy? WhatsApp पे मैं डाल दूं डॉक्यूमेंट? WhatsApp it will Yes, be ma'am. easy for us. ठीक है. So what I'll do is, so you have ideas. If you're teaching, then you'll have ideas. This is the right way to communicate a message across for a child. जैसे कि एक बच्चा मेरी क्लास में था कि वो मजाक भी करता था, बहुत सरकास्टिक था, और वो ना रॉन्ग तरीके से बच्चों को इंस्टिगेट करता था, उनको मतलब इरिटेट करता था, बहुत मैनेज करना मुश्किल होता था, छोटा था. सो मैंने बस इतना लिख दिया कि ही इज वेरी विटी, ही वेरी इंटेलिजेंट एंड विटी, he has very creative ideas of conversation, but at times he rubs his friends the wrong way. That's it. वो पता लग गया. Rubs the wrong way means उनको वो गलत तरीके से बात करता है कभी कभी, ठीक है, पर आई हैवंट यूज्ड दैट ही इज वेरी रूड, आई हैवंट यूज्ड नो नेगेटिव वर्ड्स, बट एट द सेम टाइम आई हैव कन्वेड द मैसेज कि एट टाइम्स वो जो है किसी को इंटिमिडेट कर देता है, ठीक है. So these are few things as a teacher you should learn, क्योंकि sometimes हम realize नहीं करते हैं, पर हमारी communication ऐसे हो जाती है कि जो बच्चे जो है personally ले लेते हैं, और जब वो personally ले लेते हैं ना, तो they stop listening. क्लास में होते हैं लेकिन वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, और आपको ये लगता है कि बच्चा स्टबर्न है, बच्चा जिद्दी है, पर वो ऐसे नहीं होता. उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है कि इस टीचर को तो मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ, इस तो हमेशा मेरे लिए गलत ही लिखना होता है, कभी अच्छा लिखती नहीं है ना. और हम ये फेस करते भी हैं एट टाइम्स, और हम रियलाइज नहीं करते एक्चुअली वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसके लिए लिखी कुछ गलत दी है, जो कि उसको पर्सनली उसने ले लिया है, राइट. हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा अच्छा नहीं है, बिल्कुल शरारती है, ये है वो है, पेरेंट्स को क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, पर जब हम ये करते हैं हम एक्चुअली बच्चे का जो है उसको हर्ट कर देते हैं, बिकॉज नो किड वांट्स टू बी. हम एज एन एडल्ट ऑल्सो, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं भी अप्रिशिएट होना चाहती हूँ, आप भी अप्रिशिएट होना चाहते हो, बिकॉज यू वर्किंग हार्ड. और वो बच्चों को तो भी पता ही नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ल्ड, राइट. सो एट टाइम्स दे मे डू things in a wrong way, but their intentions are never wrong but we make their intentions wrong when we start telling them that they are wrong, right. So these are few things we as adults need to learn. I have also learned over the years, so it's not a big deal. Whenever we learn, it's better. So like now next is adults role, communicating love, understanding and acceptance. So when we say love, doesn't mean that you start hugging the person, yes, I really care. No, as a teacher you also have to keep an arm's distance, but at the same time you have to treat the child, when we say communicating love, as an adult, that you understand what they are saying, you understand them for their view of point, and you accept their view of point. You're not saying condemning them, you are accepting whatever viewpoint they have, and then you are adding on yours. So for example, अगर बच्चा कहता है कि मैंने नहीं काम करना, ये तो आपको फेस करना ही पड़ता होगा, ठीक है, आपने क्यों नहीं काम करना, बताओ, एनी स्पेसिफिक रीजन, मेरा आज मूड नहीं है, ओके परफेक्ट, मत करो आप, यू कैन लीव इट फॉर नाउ, जब आपका मूड होगा तब कर लेना, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं करना तो आप मुझे बताओ कि इसकी जगह आपने क्या करना है. पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द चाइल्ड. अगर आपने अब क्लास में सब काम कर रहे हैं, आपने नहीं करना, ओके, डोंट डू दिस वर्क, व्हाट वर्क यू वांट टू डू, टेल मी, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, मेरा कहा हुआ काम नहीं करना, आप बताओ आपने क्या करना है. सो उस बच्चे पर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे ना, यू आर ट्रीटिंग दैट चाइल्ड एज अ एडल्ट, उसको आप थिंकिंग करवा रहे हो, यू आर मेकिंग दैट चाइल्ड थिंक फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन यू मेक दैट एज योर रूल कि ओके, ये टीचर तो मुझे सोचने के लिए बोलेगी, चलो जो टीचर कह रहे हैं वो ही कर लो, राइट, दे विल डू इट. Sometimes it has happened that the child has misbehaved in the class.
फाइन, मिसबिहेव्ड। अब आप बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर आपने मेरी क्लास में ये करा है, मैं आपको अब इसके लिए क्या करूं, इसके लिए आपको सॉरी, oh I thought somebody was asking, yeah, तो मैं आपको इसके लिए I would refrain from saying punishment, but इसका आपका क्या consequences होना चाहिए। मैं इसके लिए अब बताओ कि obviously this is not allowed, आपने ये चीज करा है, तो अगर आपने ये करा है तो अब आप बताओ कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए ताकि ये ठीक हो जाए, आप ही बताओ, राइट? उससे क्या होगा, द चाइल्ड विल थिंक, the child will know, they will start thinking for themselves, they will pay attention to whatever they are done, and next time they will behave themselves or they will not. For example, अगर आप बच्चों को से लड़ाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, क्लास में, और वो एक दूसरे से they are talking bad and to each other and one of the child starts crying, ठीक है, तो आप उसको जिसने दूसरे बच्चे को रुलाया है, आप उसी से पूछो कि अगर आपके साथ ये होता तो आपको कैसा लगता, हाउ वुड हैव यू फेल्ट इफ समबडी वुड हैव सेड दिस टू यू, आप मुझे बताओ। डजंट मैटर वो रो रही है, चलो ठीक है आपने कह दिया, वो हम देख लेते हैं, पर अगर आपके साथ ये होता और आपको कोई ऐसे बोलता तो हाउ वुड हैव यू फेल्ट। लेट द चाइल्ड थिंक, दिस इज कॉल्ड building up that emotion, making that child think of the feelings that he or she will feel if she was in the same situation, or if somebody would have behaved in the same manner as he or she is behaving. And I'm sure if you put this, I have seen children improving. This is a very good way of when you put responsibility on the child for their actions. Okay. And when you talk to them in such understanding manner, they will never feel rejected, they will never feel that they are not important, even if they are mischievous. So many times people I had in the class that you may not like this child because he's very naughty. I said no, I like him because I know he's very intelligent, because if he can think of these things, that means he's intelligent. But yes, I sometimes get upset because he's disturbing my class. So it's just framing the right words to let them know that it's not you personally that I don't like. It is certain mannerism that you show when I am teaching in the class that I don't accept, right? So again, the next point is how authoritative you are. So one is obviously empathetic and loving body language, everything has to be communicated. And then your authority, how authoritative you are. If you're going to be very authoritative in the class, that you just listen to me or this is going to happen, so consequences are already decided, then it is wrong. Yes, I'm going to tell, so first 20 minutes is I'm going to tell you, then I'll give you 10 minutes to ask questions. Let me finish. I usually always tell my class that if you disturb me or you start talking to me when I am explaining something, then what happens is my thought process is hampered and then I forget. So what I have prepared to let you know for this lesson, if you let me say that for first 20 minutes, I speak whatever I think you should know for the lesson, and then you ask me questions, it will be better, because then I know that I have told everything that is required for this particular lesson, and then you start asking me questions and I will answer, right? But if I say you will not speak, when I'm speaking, just listen to me, I'm the authority, I've told them, right? And then they will obviously go against it. Nobody wants to listen to the authority. They all want to say that we are not less, even if they are. Let me tell you, don't think kids are kids. Whether you, obviously this is how we've been conditioned to say that बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता है, बच्चों को हमसे ज्यादा पता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वो हमारी आईज से पहचान लेते हैं कि whether we like them or not, whether we are accepting them or not. So we have to be very, very careful as adults how we come across to our students or our children. So again, in your book also it said that it's all right, do whatever you want to. So this is permissive in the sense that you have given them permission that whatever you're doing is fine, as long as you're not hurting each other. So there have to be some ground rules every time. So if you're going on the ground, you ensure you're not running around, ensure you're not pushing, ensure that you're not hurting anybody, and you don't get into fights. These are my 4 ground rules if you want to be in the park.
And now you can do whatever you want to. You can sleep, you can close your eyes, you can go and watch the trees. And you will see, if you've given clear instructions to the children that these are the ground rules I want in the ground, and rest you can do whatever you feel like, they will start correcting each other. I have seen this myself. If I have set rules that these are the rules, rest you can do anything you feel like, they start correcting each other that this will upset the teacher, this you can't do this, and they start looking after each other because you have given them the responsibility. So it's basically more to what we call democratic and participative approach, right? And so here, how can we communicate more? So really listening. So we have appropriate response. So if we are listening properly, we will give appropriate response to the children. So you can obviously have a go at the examples given here. That will give you more idea. And if in case when we have our next lesson tomorrow, so we can go through all this, okay? And then in the class, very important, have 5 minutes. So if you feel your children are very, very fidgety, they don't sit down properly, have a circle time, which we call circle time. But you can start with, you have these like, for example, as soon as you enter the class, you see a certain trait in a child, or it was very, very unpleasant. So you just have a circle time. We call it circle time, but they can sit in their classes on their seats and just talk about it. Say, I start with the term, I feel annoyed. So complete the sentence. I want to start from one child who you feel would answer, or you give an example. I feel annoyed because the class was very noisy when I came. Simple. This is my thought process for feeling annoyed today. What is yours? I feel annoyed. You know, so this way what happens is the children think कि उनको कौन सी चीज बुरी लगी. आपने क्या करा है? आपने एक communication का, what you call a river of communication has started in the class, because they have started now. And plus, अगर आप creative teacher हैं तो आप क्या करेंगे, जो आप topic पढ़ा रहे हैं उसमें से words जो है 10-15 निकाल कर रख लेंगे for the month to use those in these communications. 5 मिनट आपको लग रहा है कि आपने पढ़ा दिया है, अब बच्चों ने पढ़ लिया, अब मुझे समझ नहीं लग रही कि क्या करवाऊं. Start with this. Something more constructive. They will learn vocabulary also because they are learning from each other. जब किसी ने कोई नया word बोला, नहीं समझ आया, तो आपने क्या करा? Okay, doesn't matter. मुझे भी नहीं आता. Let's see इसका correct meaning क्या है. If you will as a teacher also agree कि yes, मुझे नहीं आ रहा, मेरे को भी dictionary देखना पड़ेगा meaning के लिए, they will learn. It is okay not to know everything. We as teachers are not perfect. I always say I'm not a perfect teacher. I also learning. As whenever I teach you, I learn new things. Whenever I'm teaching or reading something to teach you, I learn few new vocabularies. And I show my books to my students where I've written word meanings, where I've the meaning above that, because this was new for me, or maybe even if I had learned, I had forgotten about it. So this way the children get this, that it's okay to be wrong. It's okay not to know things. We are learning. Everybody's learning every day. So as teachers also, this is how we set example. Because हमारे यहाँ पर ये हो जाता है कि अरे टीचर ने बोल दिया कि मुझे नहीं आता, फिर तो बच्चे सीरियसली नहीं लेंगे. सीरियसली बच्चे लेते हैं उस टीचर को जो अग्री कर जाती है कि मेरे को भी नहीं आता, मैं भी लर्न करती हूँ आपको सिखाते हुए, बिकॉज उनको ये लगता है ये जेन्युइन पर्सन है, इसको पता है. और अगर आपको नहीं आता और आप कह रहे हो आपको आता है और कहीं आपने गलती कर दी, you become a laughing stock for them, and then they will not respect you. So this is how we communicate well with our students, right? Okay. Yeah, again, the same thing for communication also. When we feel how to communicate well, teachers and parents go hand in hand. So whatever we feel that there's a problem with the child, we have to communicate right to the parents. Like here, the example is that you must supervise Rahul's studies every day. He's very weak in all subjects, and if he fails the examination, don't blame me. So you are communicating like this to a parent.
Circular sent to parents. Parents are hereby notified that students coming to the class in improper uniform or without books will be detained after school. Then parent to teacher, after all, why do we send our children to school? It's your responsibility to make sure they understand. So do you see, if we are going to communicate in this way, this is the reply we get. Why? Because it's the most hurtful remarks we have sent to the parents, and it has been most hurtful communication ever you could come across, right? But the same thing that I'm very concerned about Rahul. He's such a friendly, helpful child. He needs to help in the study. He needs help in his studies, and I'm wondering if we both find a way to help him. So do you understand? So now what has the same sentence? You are communicating the same thing, like I said before as well. The written communication has to be perfect. But here, the same sentence framed differently is showing how well, as a teacher, you are concerned, how well you want to care for the child, and you want to find a solution to make him better as a child, but you're not understanding why things are happening. So they will communicate well. Okay? I think that's about it. Yeah. Any questions now before we end? Then we'll start, because I think we've done with our lesson for today, and then we'll do the next tomorrow. So any questions now? And sometimes it is necessary to give a circular in a some authoritative way, because some parents are avoiding their childs now because of their jobs or anything else. हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ प्रोफेशनल आप वो ऐसे नहीं कह सकते कि अगर वो फेल हो गया तो मुझे मत ब्लेम करना। फिर भी आपको फ्रेम अच्छी तरह करना है। एंड हाँ, आप ये कह सकते हो कि it is where we are concerned, it is very important that you come and for the betterment of your child to come and see us. This is the time, this is the date, convey it to the parent and say that we want to personally see you, right? फिर आप communicate करो जो भी communicate करना है. But as a circular written communication, you have, because the thing is when somebody reads, it has to come across pleasant. आप और जब बात भी कर रहे हो, वो बात आपको ऐसे फ्रेम करना है कि वो फर्म भी लगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऑफेंडिंग भी ना हो. Did you get me? बिकॉज ये Yes, ma'am. चीजें हमें लर्न करनी पड़ेंगी ना, बिकॉज अगर हम पेरेंट्स को ऑफेंड कर देंगे, वो केयर नहीं करेंगे, वो गुस्सा खा लेंगे और वो बिल्कुल केयर नहीं करेंगे बच्चे की, कह रहे दो टीचर तो ऐसी बोलती रहती है, उसको बिल्कुल नहीं वो है, बिकॉज वी ऑलरेडी ऑफेंडेड द पेरेंट्स. इफ वी से थिंग्स लाइक वी नो that you are, you know, but the thing is because of this reason your child is suffering, तो हमें कुछ solution निकालना ही पड़ेगा. फिर उनको फिक्र होता है, क्योंकि अब हम फिर जाके, वो टीचर तो बहुत अच्छी है, वो तो इतना फिक्र कर रही है, हमें जवाब देना है, what to do. Human nature है ना, this is universal. Okay, okay, totally getting your point. Yeah. Anybody else? No questions? All okay? You've understood what we did so far? Very quiet. Yes, ma'am. Okay. I thought you're thinking whether we should say. Okay, that's good. So should we, I think 1 hour class you have, should we continue with the next unit, or do you want to stop here today and we can continue next day, tomorrow? Student? as per schedule we have to work ना, जो schedule है, नहीं तो फिर schedule हो जाएगा. So I think 10:30 to 11:30 class थी, right? Like my 10:30 to 11:30, you have 3 to 4. So you have 4 o'clock, they're done. You have 4 o'clock on your watches. Yes, ma'am. 4:10. Okay, so we are already up to 10 minutes. Sorry, sir. next class week. Sir, कल है ना? Yes, ma'am. तो सर फिर कल, मैम एक बार ये जो प्रेजेंटिंग विंडो बंद कर देंगे एक बार. हाँ जी सर. सर कर दी. प्लीज एक बार सभी जितने भी लर्नर्स हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें.
मैम को तो आप सभी देख रहे थे ना, तो मैम भी तो देख ले आप लोग। मुझे भी तो शक्लें दिख जाए। देखिए आप सभी सौभाग्यशाली हैं और आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में ऐसी कोई क्लास भी अटेंड करेंगे कि मैम आप लोग को इंग्लैंड से पढ़ाएगी और आप लोग इंडिया में बैठ के उस कक्षा को अटेंड कर रहे होंगे। तो मैम मेरा अपना जीवन का ये मैंने बहुत सारी क्लासें मैं कंडक्ट करता हूँ, लेकिन ये अपने आप में मेरा अलग से अनुभव है। थैंक यू सर। सर इंडिया ग्रो कर रहा है। बिल्कुल इंडिया ग्रो कर रहा है। थैंक यू मैम। Art of communication again. We are learning new ways of communication now. Internet. अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है इग्नो के रिगार्डिंग या कोई पर्सन मन में है, अक्सर मैं ये लास्ट में पूछता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अन्य तो फिर जो कल कक्षा है उसमें शेष बातें सारी की सारी। सर मैंने पूछना है। जी बोलिए। सर कल मैंने अपना एग्जाम फीस जमा करने के लिए खोला था, तो मेरा एनरोलमेंट नंबर ही गलत बता रहे थे। जी क्या रोल नंबर है, बोलिए आप अपना। सर अब तो फिर कल जब एक आप मिनट। कक्षा में आएंगे तो अपना एनरोलमेंट नंबर याद से नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। ग्रुप पर है, ग्रुप पर मैम ने सेंड किया था। यस मैम। तो उसमें फिर मैं आपको लाइव बता दूंगा, यहीं पर ही लाइव दिखा दूंगा कि कैसे आपने करना है। उसमें क्या है मैं बता देता हूँ। एक बार अभी आपका जनवरी सेशन है या जुलाई सेशन है? सर जून सर में ये एग्जाम लास्ट होने था। हमारे। सॉरी एक बार दोबारा बोलेंगे, जनवरी सेशन है जुलाई सेशन है? सर जैन में, उसमें जून में होनी है ना हमारी एग्जाम, आई थिंक। आपने जो एडमिशन लिया था वो जनवरी में लिया है ना आपने? यस सर। हाँ, तो वो जो एडमिशन है उसकी 9 डिजिट और उसमें और 10 डिजिट के 2 नंबर हैं। कई बार ओके क्या सर। होता है जब हम वहाँ पे नो नंबर डालते हैं तो एक स्पेस को भी जी। डाल देते हैं, तो उस केस में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपका नो 9 सर डिजिट मैंने। है तो 9 डिजिट डाले के उसमें स्पेस नहीं डालना है। कोई बात नहीं, अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी समस्या का समाधान हम कल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you, sir. कल मिलते हैं मैम। Thank you.